अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बनाने जा रहे पालक की रोटी। थोड़ी सी पालक थी मेरे पास। अब इसका कोई ग्रेवी या फिर कुछ बना नहीं सकते, बहुत कम था, तो मैंने सोचा चलो रोटी बना लेते हैं। रोटी बना देंगे तो पालक भी यूज हो जाएगा। मोreover, with palak roti you don't need any particular gravy, you can have with curd as well। तो चलो शुरू करते हैं। I've taken a cup of wheat flour। इसमें हम ऐड करेंगे 2 tablespoons of बेसन, चने का आटा, एक हैंडफुल ऑफ पालक फाइनली चॉप्ड, हाफ टी स्पून चिली पाउडर, क्वार्टर टी स्पून टर्मरिक एंड 3/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। इसके साथ में हाफ कप ऑफ कर्ड। Mix everything together and knead to a soft dough। Add a tablespoon of oil, knead well and set it aside। Roll out just like how you would for regular chapatis and roast them on high flame। कोई भी भाजी यूज कर सकते हैं, कोई भी ग्रीन्स यूज करते हैं। इफ यू हैव मेथी की भाजी यू कैन यूज दैट एज वेल इंस्टेड ऑफ पालक। See that both sides of the rotis are equally cooked। Apply oil on one side before removing to a casserole or a plate। Continue till all the rotis are completed। Palak ke rotis are now ready। You can have it with curd or with any accompaniment of your choice। Do try it out। Ingredients, as always, mentioned in the description box। Like, share, and subscribe। Thank you for watching।